Today we will discuss an important topic of thermodynamics, that is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics and its mathematical formulation. First of all, we will state the first law of thermodynamics. It states that energy can neither be created nor destroyed, but can be converted from one form to another. यानी ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So there is one more statement. The total energy of the universe, that is system plus surroundings. You know that the thermodynamic universe is system plus surroundings. So the energy of the universe, that is system plus surroundings, remains constant. Although it may be transformed, although it may undergo transformation from one form to another. There is one more statement. Energy of an isolated system is constant. So we have many statements of this first law of thermodynamics. So here we have given you the three statements. What is the first statement? Energy today we will discuss an important topic of thermodynamics, that is first law of thermodynamics and its mathematical formulation. So what is the statement of this first law of thermodynamics? We can state this law in different ways. The first statement is energy can neither be created nor destroyed, but can be converted from one form to another. इसका ये मतलब है कि एनर्जी को हम न बना सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. There is one more statement. Total energy of the universe, that means system plus surroundings, because thermodynamic universe means system plus surroundings. Total energy of the universe remains constant, although it may undergo transformation from one form to another. So there is one more statement, that means the energy of an isolated system, remains constant. Now, mathematical formulation of first law of thermodynamics. What it means? Mathematical formulation actually of the first law means the relationship between internal energy U, work, that means W, and Q, यानी heat. इन तीन के दरमियान एक रिलेशनशिप है. The relationship is known as mathematical formulation of first law. So for example, if we take a system, अगर हम एक सिस्टम लेंगे, हम एक सिस्टम लेते हैं, आपको पता है every system is associated with a definite amount of energy, that is known as internal energy. For example, जो हमने सिस्टम लिया है ना, इसका जो इंटरनल एनर्जी होता है, इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है, it can be increased in two ways. यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं by two ways. By supplying heat to the system को हम हीट करेंगे सप्लाई. दूसरा, by doing work on the system. यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं by two ways. By supplying heat to the system, यानी सिस्टम को हम हीट करेंगे सप्लाई from the surroundings, or by doing work
ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे। सो इस तरह क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। हम मानते हैं फॉर एग्जाम्पल सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, हमारे लेट द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम मानते हैं इज इक्वल टू U1। हम मानते हैं U1 के बराबर मानते हैं, हमने जो सिस्टम लिया उसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू U1। अब हम मानते हैं अगर ये सिस्टम करता है, ये करता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी सिस्टम जो है ये करता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब by the system equal to Q। हम मानते हैं ये अमाउंट ऑफ हीट करता है एब्जॉर्ब ये सिस्टम इक्वल टू Q, यानी Q के बराबर ये इंटरनल अमाउंट ऑफ हीट करता है एब्जॉर्ब। अब जो इसकी जो इंटरनल एनर्जी बनेगी, देन द इंटरनल एनर्जी विल बिकम, इसका जो इंटरनल एनर्जी बनेगा दैट विल बिकम इंटरनल एनर्जी विल बिकम that will become U1 जो उसका ऑलरेडी था और उसने जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर दिया that will become U1 plus Q। अब हम मानते हैं एक और चीज, हम मानते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। हम सिस्टम पे एक काम, उस पे काम होता है, सिस्टम पे काम होता है, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हम मानते हैं वो इक्वल टू W। अब जो इंटरनल एनर्जी उसकी बनेगी इंटरनल एनर्जी, यानी आफ्टर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम द इंटरनल एनर्जी विल बिकम, इंटरनल एनर्जी बनेगी, इंटरनल एनर्जी विल बिकम U1 plus Q plus W। अब ये बनेगा उसका इंटरनल एनर्जी, यानी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद और वर्क करने के बाद, यानी सिस्टम पे वर्क करने के बाद जो हमें इंटरनल एनर्जी बनती है उस सिस्टम की, दैट विल बिकम U1 plus Q plus W। नाउ हम मानते हैं लेट द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हम मानते हैं जो फाइनल एनर्जी इंटरनल सिस्टम दैट इज इक्वल टू U2। हम मानते हैं वो इनिशियल था यहां पर U1, अब हम मानते हैं उसका फाइनल जो U2 है। सो U2 जो फाइनल जो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई, यानी आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट equal to Q and after doing work on the system equal to W, उसका जो फाइनल इंटरनल बनता है that is U2 is equal to, that will become U1 plus Q plus W। so ये बनेगा U2 minus U1 is equal to Q plus W। so this is final minus initial, that is equal to del U, there is a change in internal energy, is equal to Q plus W। so this is the, अगर हम मानते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, this is the mathematical formulation of first law of thermodynamics, ये mathematical formulation of first law of thermodynamics है, this equation 1, that is del U is equal to change in internal energy of the system is equal to the sum of heat absorbed by the system and work done on the system। यहाँ पर जो ये change in internal energy है this is equal to the sum of amount of heat absorbed by the system and work done on the system। अब अगर हम मानते हैं यहाँ पर अगर वर्क होगा, यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इफ द वर्क जो यहाँ पर वर्क होगा इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी अगर मानते हैं ये सिस्टम है, फिर यहाँ पर जो वर्क होता है इट इज डन, वर्क जो होता है दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, देन हम लिखेंगे यहाँ पर फिर W के बदले हम लिखिए माइनस P del V, ये P del V है, सो विल गेट del U is equal to Q minus P del V। ये इसके बदले हम समझ करेंगे W के बदले, if the work is equal to work of expansion। एक और ये du बनेगा, that is change in energy will become Q minus P del V। अब यहाँ पर Q बनेगा बराबर del U plus P del V, यानी यहाँ पर amount of heat absorbed in the system is equal to del U plus P del V, P del V, change in volume। Here यहाँ पर जो P है,
जो P है यहाँ पर, ये P हो गया, यहाँ पर ये प्रेशर है, दिस इज प्रेशर इन एक्सटर्नल प्रेशर है ये, एंड डेल U जो है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल V जो यहाँ पर दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन जब होता है उसमें चेंज होता है वॉल्यूम, सो दैट इज रिजल्ट बाय डेल V। सो P यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है और डेल V यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ से निकालेंगे, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ। The first result is Q और W जो है, Q and W ये स्टेट फंक्शन नहीं है, दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस, बट देयर सम, इनका जो सम है Q प्लस W इक्वल डेल U, सो इनका सम जो है दैट मीन्स Q प्लस W दैट इज स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन है। Q स्टेट फंक्शन है, W स्टेट फंक्शन है, both are path functions, but their sum, the sum जो इनका है sum, that quantity, that means sum of these Q plus W, that is del U, is a state function। ये वो रिजल्ट हो गया यहाँ पर। दूसरा रिजल्ट जो यहाँ पर हम निकालेंगे, U जो होता है इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी फॉर, हमने ये पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो इंटरनल एनर्जी होता है U ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब अगर टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, अगर हम मानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस द प्रोसेस आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस या फॉर आइसोथर्मल चेंज, डेल U जो होगा it will be equal to 0, that means change in internal energy is equal to 0। उससे क्या होगा, जब change in internal energy is equal to 0, that means del is equal to 0, उस केस में Q जो होगा that is equal to minus W, that is equal to minus, what that means, that means amount of heat absorbed by the system, amount of heat absorbed by the system is equal to the work done by the system, that is equal to work done by the system। ये इसका दूसरा रिजल्ट है, यानी अगर डेल U होगा 0 के बराबर, उस केस में Q होता है माइनस W के बराबर। इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। द थर्ड रिजल्ट इज व्हिच वी कैन ऑब्टेन, which we obtain from this mathematical formula, the first law. What is that? That is during adiabatic change, अगर adiabatic change होगी, adiabatic process होगी, दैट उस केस में होगा Q is equal to 0, Q होता है 0, क्योंकि सिस्टम वहां पर ये इंसुलेटेड सिस्टम होता है, इंसुलेटेड, न हीट जाती है अंदर ना आती है बाहर, सो उस केस में डेल U जो होता है दैट इज इक्वल टू W adiabatic, सो डेल U होता है बराबर W adiabatic, क्योंकि Q होता है उस केस में 0 के बराबर। सो दिस वाज अबाउट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके।